Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We have started a new initiative that will help the aspirants to revise the current affairs through options. The options selected here are of utmost importance. They will help you to revise current affairs of the past 4 months. This will boost your memory through mind mapping. Due to time constraint, we have limited option revision in the video. Rest of the options revision will be available in our daily current affairs application quiz section. Hello everyone. So in this video we will be discussing important current affairs for international affairs of April month. Session will be quite interesting and important, so stay tuned till the end. Let's start. First is name the global network of laboratories that has recently launched the World Health Organization launched by WHO to monitor emerging coronaviruses of public health importance. We know that COVID-19 came and it became a very one of the important diseases in our history, right? We saw lockdown, economies were implementing because of it, and now, so such scenario does not occur again, and the coronavirus, if there is emerging it, there is an update in it, and if there is a new strains of coronaviruses coming in the world, so we should keep a check on it. For the same reason, WHO they have set up a laboratory, all right, or a network of laboratory. What is the name of that laboratory? It is COVINET, and from India, remember, three laboratories are part of the 36 laboratories from 21 countries. So in this COVIDNet, 36 laboratories are there, and from India there are three. Which are they? CSIR's arm, NEERI, this is in Chennai, Tamil Nadu. Then ICMR's NIV, National Institute of Virology, and third is your THSTI, that is Transitional Health Science and Technology Institute, that is in Faridabad, Haryana. Next, according to the 38th annual World's Billionaires list released by Forbes in April 2024, India's Mukesh Ambani secured which rank globally, while Dash has topped the list with a net worth of $233 billion. So, according to the World's Billionaires list, that is the 38th annual World Billionaire list released by Forbes, here India's Mukesh Ambani secured which position? He secured 9th position globally. And who secured the first position? Bernard Arnold secured the top position in this list. Mukesh Ambani was having a net worth of $116 billion. And he also became the first Asian to reach a mark of $100 billion in net worth. Next, which of the following countries has partially joined the Schengen area, Europe's ID check free travel zone in March 2014? Right option here is Romania and Bulgaria. Right, as of March 2024, Romania and Bulgaria became the newest member to join Schengen area, that is your Europe's ID check free travel zone. If any Indian wants to travel to Europe, then they need to have this Schengen visa, right? And they have to apply this prior to their travel. And as of now, this Schengen area has a total of 29 members. So right option is option 4, both 1 and 2. Next, according to Business Environment Ranking 2024 report released by EIU, that is Economist Intelligence Unit in April, India secured Dash rank in the list, while Dash country has topped the position for the 16th consecutive year. So, according to this Business Environment Ranking 2024 that is released by EIU, India secured what rank here? India is at 51st position. And who secured the top position for the 16th consecutive year? It is Singapore. It secured the 16th position for this. It secured the first position for 16th consecutive time. Who was on the second position? USA. And who is third? Second is Denmark. I correct. Second is Denmark, and third is United States of America. Next, as per the Economic and Social Survey of Asia and the Pacific, boosting affordable and long-term financing for governments report released by UNESCAP in April, India is expected to lose approximately how much percent of the daily working hours due to the increasing temperatures by 2030. So according to them, India is expected to lose around 5.8% of the daily working hours because of the rise in the temperature because of global warming. And the report mentioned that the climate change may lead to larger agriculture subsidies, as farm subsidies will account for around 20% of the total farms in India. Next, which international organization has recently released a report, Small Island Developed Digital States, how digital can catalyze SIDS development, highlighting the transformative potential of the digital for small island developing
States. So it is United Nations Development Program headquartered in New York, USA. Right? They have released this report, Small Island Digital States, how digital can catalyze these development, as this will help these SIDS to perform economically and to set up a economic there, so that the people working can also work there and live a good lifestyle there. Right? Next, in April, which currency was introduced by Reserve Bank of Zimbabwe to replace their local currency Zimbabwe dollar, real-time gross settlement dollar? So Zimbabwe gold, this is the new currency that has been recently launched by the Reserve Bank of Zimbabwe. And these notes and currency or coins for this currency will be has started circulating in the economy since 30th of April 2024. Next, which country has been recently selected by the United Nations Commission on Status of Women to chair the 69th session in 2025? So, which country has been selected by the United Nations Commission on Status of Women? It is Saudi Arabia has been selected to chair the 69th session in 2025. Next, according to the Global Hepatitis Report 2024, Action for Access in Low and Middle Income Countries released by World Health Organization in April, DASH became the second most dangerous disease, causing more deaths after tuberculosis. So it is hepatitis. It became the second most dangerous disease that is causing more deaths after TB, that is your tuberculosis. TB is a communicative disease. It is caused in your lungs, right? And hepatitis, it became the second disease after tuberculosis as per WHO, that is causing the most deaths, right? Take a note of this. Next, according to Global Trade Outlook and Statistics of April 2024 report released by World Trade Organization in April, the global merchandise trade volume is projected to grow by how much percent? So the global merchandise trade volume is expected to grow by 2.6% in 2024, and it is expected to grow by 3.3% in 2025. Right? And India's merchandise export for 2023 was $432 billion, that is 5% lower than 2022. Next, according to the 9th edition of the Financing for Sustainable Development Report 2024, Interagency Task Force on Financing for Development released by UNDESA in April 2024, how much amount is needed in investment to close the development financing gap in the Sustainable Development Goals? So in order to achieve the target of these Sustainable Development Goals, how much extra amount is needed as per the 9th edition of this Financing for Sustainable Development Report 2024 released by UNDESA, that is United Nations. UNDESA stands for United Nations Department of Economic and Social Affairs. So there is a gap of $4.2 trillion, right? We need this much more amount in order to cover for the financing in the Sustainable Development Goals. This was earlier, if we talk about COVID-19, during the time it was close to $2.5 trillion, but in the past few years and because of COVID-19, this amount has risen to $4.2 trillion. Next, as per the EA Earth Actions 2024 report, that is Plastic Overshoot Day, September 5th, 2014, released in April, India is among the top 12 nations that contribute to around how much percent of the world's mismanaged plastic waste. So India accounts to 60% of the world's mismanaged plastic waste, according to this EA Earth Action report titled Plastic Overshoot Day. And this question can also be asked, that Plastic Overshoot Day is observed when? On 5th of September, right? And India is among the top 12 nations that is having 60% of the world's mismanaged plastic waste. Next, according to the report Top 10 Busiest Airport Worldwide for 23 released by the Airports Council International World in April 2024, India's Delhi Airport, that is Indira Gandhi International Airport, secured 10th position in 2023, while Hartsfield Jackson Atlanta International Airport, that has secured the top position here. So right option here becomes option 2. In this top 10 busiest airport worldwide, who secured the top position? It is Hartsfield Jackson Atlanta International Airport, that is of USA, and on 10th position was Indira Gandhi International Airport of Delhi. IGIA Indira Gandhi International Airport, it is handling close to 7.22 crore passengers in 2023, right? They handle this much passenger in 2023.
Next is according to Interwoven Lives Threads of Hope Ending Inequalities in Sexual and Reproductive Health and Rights report released by United Nations Population Fund State of the World Population in April 2024. India's population is expected to touch dash surpassing the China's 1.425 billion dollar. So according to this, India's population is expected to touch 1.44 billion in population, right? And China is at 1.425. Just remember the data. Question can also be asked that which is the most populated country in the world. It is our India now, right? Next, which edition of India-Uzbekistan joint military exercise Dust Lake commenced at the Termez district, that is the Republic of Uzbekistan. So this is the location. Definitely question can be asked that which is the country or what is the location of the exercise Dust Lake 2024. So it was what is Republic of Uzbekistan. Question asked is that it was which edition. So it was option 5. It is option second, that is the 5th edition of this exercise where this Dust Lake exercise between India and Uzbekistan was held, and location is Uzbekistan. Next is which country has recently become the 38th nation to sign the NASA's Artemis Accord for space exploration. Artemis Accord is basically for peaceful space exploration by the countries. This Artemis Accord launched by NASA, and recently it is Sweden that became the 38th nation to join this Artemis Accord. Switzerland was the 37th country to join this Artemis Accord. Next, which country's National Audit Office recently signed an MOU, the Comptroller and Auditor General of India, to foster international cooperation. So which country's National Audit signed this MOU with the Comptroller and Auditor General of India? It is Bulgaria, right? Take a note of this. Next, the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, that is DARPG, they signed an MOU with the Ministry of Civil Services of which country for cooperation in the human resource development in civil services over the next 5 years. So, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, they signed an MOU with the Ministry of Civil Services of which country? It is of Cambodia, right? And it is for the cooperation in the human resource development even in civil services over the next 5 years. Here aim is to empower or make a digitally empowered citizen and digitally transformed institution where digitization will be playing an important role. And this MOU here is for the next 5 years. Next, the International Financial Service Centers Authority of India, they signed an MOU with Capitals Market Authority of which country to share information regarding technologies and innovation within the financial and regulatory ecosystem. It is Kuwait, right? International Financial Service Centers Authority of India and Capitals Market Authority of Kuwait, that is Capitals Market Authority of Kuwait, they signed this MOU, and it is to share information regarding the technologies and innovation within the financial sector, right? So that the financial sector can grow and more use cases can be implemented in a different way. And this MOU, this was signed during the India Kuwait Investment Conference 2.0. And where was this held? This was also held in Kuwait. Next, United Nations High Commissioner for Refugees, they have launched UNHCR Climate Resilience Fund that is aimed at raising $100 million by dash year to shield refugees and displaced people from the climate shocks. That is 2025, right? So UNHCR, they have launched this UNHCR Climate Resilience Fund that is aimed at raising $100 million, and it is to shield refugees and displaced people from the climate shocked areas and to provide them better protection, solutions, resilience and adaptation. Next, the 4th quarterly report for 2023 as per the United Nations Conference on Trade and Development released in April, India's service export has increased by 11.4% to $345 billion in 2023. So right option is option 4 here. And as per the report, the world service export has increased by 8.9% to $7.9 trillion in 2023. And but here remember, if we talk about China, China's service export has decreased by 10.1% in 2023. But remember, China emerged as the top performer among the developing countries in terms of service exports, followed by India. Moving on, which Indian naval ship has recently participated in the maritime partnership exercise with United Kingdom Littoral Response Group South?
It is INS Shahadri. Right, this is the Indian naval ship that participated in this maritime partnership exercise with UK Littoral Response Group South. And what was the exercise? Basically, remember one more thing apart from this. It was INS Tir that was representing the first training squadron exercise Cutlass Express, right? So it was helping, or it was taking part in the Cutlass Express exercise, Cutlass Express. Then if we talk about INS Jatayu, right, this is the Indian naval ship that was commissioned at Minicoy Island in Lakshadweep. And if we talk about INS Sandhyak here, remember INS Sandhyak was commissioned where? At Vishakhapatnam, in Vishakhapatnam. Next, which city and country has recently hosted the 26th World Energy Congress? So, which city and country? It is Rotterdam, Netherlands, right? They hosted the 26th World Energy Congress. Take a note of it. If we talk about Kampala, Uganda, here remember Group G77 plus China. Third South Summit was held here in Kampala, Uganda. Next friends, let's move to the revision part. They will be very beneficial for your learning. Let's start. Next, in May, Indian boxing team has won dash at the Asian Boxing Confederation Asian अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 24 इन कजाकिस्तान. तो इन्होंने कितने मेडल जीते? तो टोटल ऑफ 43 मेडल्स यहाँ पर इंडियन टीम के द्वारा जीते गए, राइट, बोथ इन एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन एशियन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर टोटल 43 यहाँ पर मेडल्स इंडिया के द्वारा जीते गए, करेक्ट. एंड मेडल्स की टैली के हिसाब से देखें तो इंडिया की पोजीशन रहेगी सेकंड, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है कजाकिस्तान. यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की, तो इंडिया के 9 मेडल थे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की, जो कि किर्गिस्तान में हुई थी. वहीं पर अगर हम बात करें यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की, तो 26 मेडल थे. यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की तो 26 मेडल थे इंडिया के. नेक्स्ट, इनमें उर्दू लिटरेचर शेख अब्दुल सलाम अब्दुल रज़ाक नोन बाय हिज पेन नेम सलाम बिन रज़ाक रिसेंटली पास्ड अवे. इन्होंने 2004 का साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता फॉर विच बुक? तो इन्होंने जीता फॉर शिकस्ता बूतों की दरमिया, राइट. टेक अ नोट ऑफ दिस. एंड इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से 2004 में सम्मानित किया गया था. इसी के अलावा अगर हम बात करें इन्हीं के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली याद रखेंगे शाहबजादा याद रखेंगे. अभी रिसेंटली रियोन पोएट मुनावर राना, इनका निधन हो गया 71 की एज के में लखनऊ यूपी में. इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2014 में उनकी पोएट्री बुक के लिए, जो कि है शाहबजादा, फॉर हिज बुक दैट इज शाहबदाबा. नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द स्पोर्टिंग एम्बेसडर ऑफ स्विस लग्जरी ब्रांड फॉर वॉचेस ओमेगा? ओमेगा के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा अपॉइंट किए गए हैं. ये एथलीट हैं, जेवलिन थ्रो से ये बिलोंग करते हैं. एंड ओमेगा ये एक ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड फॉर वॉचेस, इनके ये ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं. एंड याद रखेंगे ओमेगा ये आपका ऑफिशियल टाइम कीपर रहेगा फॉर पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 के लिए. नेक्स्ट, व्हेन वाज द कोल माइनर्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? तो 4 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं कोल माइनर्स डे, करेक्ट. एंड क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि कोल में जो माइन करते हैं उनके बारे में उनकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट, इनमें यूएई इंडिया सीईपीए काउंसिल एंड डैश साइन एमओयू टू एनहेंस इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन बिटवीन यूएई एंड इंडिया. तो यूएई इंडिया सीईपीए काउंसिल एंड किन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया? तो वो है इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, आईसीसी के बीच में ये एमओयू साइन हुआ ताकि इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ कर सके, करेक्ट. टेक अ नोट ऑफ इट. फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा. इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई एंडेंजरिंग लैंड पोर्ट्स इन इंडिया. एंड यहाँ पर आपका सभी पोर्ट्स को जेंडर फ्रेंडली बनाने का बात की गई इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इन्होंने बोला 2024 में जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड है वो 2.6% से ग्रो करेगा, वेयरएज 2025 में ये ग्रो करेगा 3.3% से. नेक्स्ट, इनमें WHO granted certification to 3 countries in Americas, that is Belize, Jamaica, Saint Vincent and Grenadines, for eliminating the mother to child transmission of HIV and syphilis.
राइट ये सर्टिफिकेशन इनको दिया गया जिन्होंने मदर टू चाइल्ड में जो HIV का ट्रांसमिशन है, राइट, एंड आपका सिफिलिस का डिजीज़ का जो ट्रांसमिशन है उस पर रोक लगाई एंड उसके को कंट्रोल करा, इसीलिए इनको यहाँ पे अभी WHO के द्वारा ये सर्टिफिकेशन सम्मानित किया गया इन 3 कंट्रीज़ को। नेक्स्ट, RBI ने लिफ्ट किया रेस्ट्रिक्शंस ऑन विच बैंक्स मोबाइल ऐप टू ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स इन इट। तो अभी RBI ने लिफ्ट किया रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पर, राइट। ये इस पर पहले अब कोई भी कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इस रिस्ट्रिक्शन को RBI ने हटा लिया है। फिर यहीं पे अगर हम बात करें ICICI बैंक, इन्होंने लॉन्च किया मनी टू इंडिया, राइट। ICICI बैंक कनाडा, ये एक होली ऑन सब्सिडरी है ICICI बैंक लिमिटेड की, उन्होंने कनाडा में ये मनी टू इंडिया एप्लीकेशन को लॉन्च किया। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। तो मिखेल मिशुतिन, इनको अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली, रीअपॉइंट किया गया है रिसेंटली एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलेंगे, राइट। रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया मिखेल मिशुतिन, और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के रशिया के, वो हैं व्लादिमीर पुतिन। गैब्रियल एटल की बात करें तो इनको अपॉइंट किया गया, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। एलियम एलिलेव, ये आपके 5th कॉन्जिक्यूटिव टर्म के प्रेसिडेंट बने हैं अजरबैजान के। लुई फिलिप मोंटेग्रो की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, ऑफ पोर्चुगल। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NABH। तो रिजवान कोयटा, इनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ NABH। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड इन्होंने रिप्लेस किया पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर महेश वर्मा को, जो कि वाइस चांसलर हैं GSS जो गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के। जगजीत पवादिया जी की बात करें, इनको रिलेक्ट किया गया एज द मेंबर ऑफ INCB, जो कि है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के। जोयश्री दास वर्मा की बात करें, ही टुक ओवर एज द 41st प्रेसिडेंट ऑफ फिकीज लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डेवलप किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस लॉइटरिंग एरियल म्यूनिशंस फॉर आर्म्ड फोर्सेस। तो वो रहेगा कैडेट डिफेंस सिस्टम्स, राइट। फिर इसी के अलावा स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने भी टेस्ट किया कलाम 250 को, राइट, जो कि विक्रम 1 का स्टेज 2 है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की, तो इन्होंने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, $225 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एंड इट इज़ फॉर द सप्लाई ऑफ आर्टिलरी एम्यूनेशंस टू सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट, नेम द रॉकी एक्सोप्लैनेट, जो भी डिस्कवर किया गया विद एन एटमॉस्फेयर बाय एस्ट्रोनॉमर्स यूजिंग द नासास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ये है 55 कैंसिरी ई। ये 55 कैंसिरी सन का नाम है, एंड यहाँ पे 5 प्लैनेट इसके रिवॉल्व करते हैं, एंड वन ऑफ द प्लैनेट इज 55 कैंसिरी ई, एंड यहाँ पर एटमॉस्फेयर डिस्कवर किया गया है अभी रिसेंटली, करेक्ट, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। टेक अ नोट ऑफ दिस, 41 लाइट ईयर्स अवे रहेगा ये प्लैनेट आपका। एंड इसी की अगर बात करें TOI 715 की, तो ये TESS ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ये भी नासा का इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। टाइटन की बात करें तो ये लार्जेस्ट मून रहेगा आपका सैटर्न का, एंड यहाँ पर अभी नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया है ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट, एंड $3.35 बिलियन यहाँ पे खर्च होंगे इस पूरे प्रोजेक्ट पर। नेक्स्ट, इन में जिम साइमंस अ रिनोन मैथमेटिशियन एंड इन्वेस्टर, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 86। विच कंट्री डज ही बिलोंग्स टू। तो जिम साइमन ये बिलोंग करते हैं यूनाइटेड अरब USA से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया, और इन्हीं को एक और नाम से जानते थे, क्वांट किंग के नाम से, करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द रेसलर हु हैज़ रिसेंटली won the first Paris 2024 Olympic quota for Team India in men's 57 kg freestyle wrestling। तो ये रहेंगे अमन शेरावत, राइट। अमन शेरावत, इन्होंने फर्स्ट पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा को जीता फॉर टीम इंडिया इन मेंस 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें कॉलिन मुनरो ऑफ डैश कंट्री, द हार्ड हिटिंग टॉप ऑर्डर बैट्समैन, हैज़ अनाउंस्ड द रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एनफोर्स द इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल डिसिप्लिन एक्ट ऑफ 2023। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड डिसिप्लिनरी एक्शन ओवर सर्विस पर्सनल्स इन इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो कमांडर्स इन चीफ एंड ऑफिसर्स इन कमांड, इन दोनों के पास यहाँ पर पावर रहती है। नेक्स्ट आ जाते हैं,
According to the data recently published by Global Trade Research Initiative, which country was the largest trading partner of India with $118.4 billion in two-way commerce? तो चाइना यहाँ पर टॉप करके आता है विद $118.4 बिलियन के साथ. सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है यूएसए $118.3 बिलियन के साथ, राइट. तो चाइना अब इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, मार्क करके चलेंगे. नेक्स्ट, which of the following Indian Defence Forces has recently signed an MOU with Bank of India for BOI रक्षक पैकेज? ये BOI रक्षक पैकेज बेसिकली क्या है? ये आपका है एक पेंशन सेविंग स्कीम, पेंशन सेविंग स्कीम, ठीक है. तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने टाई अप किया बैंक ऑफ इंडिया के साथ ताकि ये पेंशन सेविंग स्कीम या BOI रक्षक पैकेज को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके. एंड ये स्कीम इनकी ओमनी न्यू ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है. मार्क करके चलेंगे इसको. चलिए, इसी के अलावा याद रखेंगे इंडियन नेवी की बात करें, इन्होंने कमीशन किया INS जटायु को एट मिनिकॉन आइलैंड, जो कि कहाँ पर है? लक्षद्वीप में. एंड ये सेकेंड नेवल बेस रहेगा लक्षद्वीप में आफ्टर INS द्वीप रक्षक, जो कि कहाँ पे कमीशन किया गया था? कावारती में, राइट. ये पहला आपका नेवल बेस था लक्षद्वीप का और सेकेंड नेवल बेस है INS जटायु, जहाँ कमीशन किया गया मिनिकॉन आइलैंड में. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इफ्को? तो दिलीप शंघानी, इनको अपॉइंट किया गया है अभी रिसेंटली, री इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ इफ्को. करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस. बलबीर सिंह यहाँ पे वाइस चेयरमैन की पोजीशन पे रिटेन रहे ऑफ इफ्को. करेक्ट.